Hey there, I am Shraddha Shinde. I am an anchor by profession. आज हम बात करेंगे कि किसी भी कॉर्पोरेट इवेंट की ओपनिंग स्क्रिप्ट आप कैसे लिख सकते हैं। तो मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिससे आपका ये काम आसान और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। Well, before we start the video, don't forget to subscribe to the channel for more such videos. तो आप ओपनिंग स्क्रिप्ट पे काम करने से पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव द एंटायर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, जैसे कि ब्रांड नेम, ब्रांड के बारे में इन्फॉर्मेशन। देन यू ऑल्सो गेट टू नो द शो फ्लो, तो पूरे इवेंट में क्या क्या होने वाला है और कौन से सीक्वेंस में होने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास चाहिए। एंड इफ एट द इवेंट यू हैव एनी स्पेशल गेस्ट कमिंग, तो उनका पूरा नाम एंड देयर डेजिग्नेशंस। So please make sure that you have all the information ready before working on the opening script. So let's look at the 5 steps for your opening script. तो हमारा जो पहला स्टेप है that is backstage announcement. So usually किसी भी इवेंट की शुरुआत करने से पहले हम एक या दो backstage announcements करते हैं. And usually in these announcements we just ask people to settle down, और कभी-कभी safety announcements होती है. Sometimes we ask them to put their phones on silent mode. So this differs on your client requirement as well. So usually मैं जब backstage announcements करती हूँ, so it goes like this. Hello everybody, a very good evening ladies and gentlemen, and a very warm welcome to all of you. It's a pleasure to see so many people in the audience today. I would request everybody to please settle down as we are about to begin the show. Director and founder, Dr. Bharti, a distinguished achiever, holds the titles of Mrs. India 2018, Mrs. Asia 2020, and Mrs. United Nations Ambassador 2022. She's the driving. So ये जो बैकस्टेज अनाउंसमेंट है, प्लीज मेक श्योर दैट यू गिव योर बेस्ट एंड यू साउंड रियली गुड, बिकॉज ये पहली बार है जब ऑडियंस आपकी आवाज सुनने वाली है। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है दैट इज एंट्री ऑन द स्टेज एंड वेलकमिंग। So usually in formal events, I usually go to the podium and then start the event. But semi-formal या informal corporate events में आप center stage भी ले सकते हैं. Also, I would highly recommend not entering singing or dancing while you're doing a very formal corporate event. Otherwise, during Sangeets, it's okay. So मेरे पास एक ऐसा clip है मेरे show से where I am welcoming the audience, so you can definitely check it out. My name is Shraddha Shinde and I'm going to be your host for today. And it is my pleasure to welcome all of you at the SAP Concur Fusion Exchange 2023 event, which is happening in India for the first time. So can we have a huge round of applause for that? हमारा जो तीसरा स्टेप है दैट इज पंपिंग अप द ऑडियंस विद आइस ब्रेकर्स। तो अगर आप फॉर्मल इवेंट होस्ट कर रहे हैं, यू कैन स्किप दिस पार्ट एंड डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। लेकिन अगर आप सेमी फॉर्मल या इनफॉर्मल कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट कर रहे हैं, देन यू कैन डेफिनेटली पंप अप द ऑडियंस विद सम आइस ब्रेकर्स। तो आइस ब्रेकर्स पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। हमारा जो स्टेप 4 है दैट इज इवेंट इंट्रोडक्शन। So what you can do is after the icebreakers or after the welcoming, you can give the entire information of the brand and of the event. तो जो पूरा event flow है, show flow है कि आज के दिन में हम क्या क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें आप event introduction में डाल सकते हैं। I absolutely love the audience, great energy this morning. Well, with that, this event is designed to equip CXOs with essential content and real-life case studies to pivot their growth. Now please make sure कि brand information and ये जो event introduction है, please make sure you get all the information only from the client or the brand manager and do not Google it, because brands are very serious when it comes to their own name. So अगर आप Google से कुछ उठाओगे and if you do not check it with the client and directly go and present it on the stage, then it can go wrong. So better कि ये पूरी information आप उनसे ही ले and then you put it in the script. और एक बार script ready हो जाए, please make sure that you double check, because again I'm telling you brands are very important. So you again check with the brand manager or your client if the information is perfect and then you go ahead with it. So our last and final step, step 5, is welcoming the guests. So this is the time where you welcome any important guests या कोई top management है जिनका नाम आपको mention करना है, and if you want to welcome them, then this is the time you do that. So it usually goes like, I would now like to welcome Mr. Sanjay Singh, CEO AV International. Sir, it is a pleasure to have you with us and thank you so much for gracing this occasion by your presence. But before that, I would like to take this opportunity to welcome all our dignitaries on the dais, starting with our guest of honor. Let's put our hands together for Shri Deepak Ghaisas, Chairman, Genco Strategy Services Private Limited.
So while you are saying this and while you are welcoming the guests, please make sure that you maintain an eye contact with them. So body language के ऊपर मैं और एक वीडियो बनाने वाली हूँ on how you should maintain your body language while you are hosting. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया, and once you write your opening script for the next event, please mention how it went. And if you like the video, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो please make sure that you like, comment and subscribe, and keep watching this space for more such content. This is your host Shraddha Shinde signing off.